Rahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. This is 21st lecture of your progressive English Unit 4 Sugar and Spice. Today our topic is reading RSP and also poetry, testing the landscape. Come on page number 109. Here is reading RSP. Simnel cake. What is simnel cake? Let's see. Simnel cake is an English spiced cake with traditionally mean रिवायती is baked as ईस्टर, यानी ईस्टर के इवेंट पे जो है ये रिवायती तौर पे बेक किया जाता है सिमनल केक. इट्स नेम ड्राइज फ्रॉम लैटिन वर्ड. इट्स नेम ड्राइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग फाइन फ्लोर. ये लैटिन सिमनल केक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी मीनिंग है फाइन फ्लोर. सो इट वाज अ स्पेशल केक मेड विद द बेस्ट फाइनेस्ट फ्लोर. ट्रेडिशनली इट वाज आल्सो मेड फॉर मदरिंग संडे. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. उर्दू में इसका कुछ ऐसे है कि ये जो सिमनल केक है ये लैटिन वर्ड फाइन फ्लोर, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी मीनिंग है फाइन फ्लोर. और ये स्पेशल केक जो है ना मेड विद दी बेस्ट, ये जो स्पेशल केक है बेस्ट एंड फाइनेस्ट फ्लोर से बनाया जाता है. और रिवायती तौर पे ये जो है मदरिंग संडे पर भी इसको बनाया जाता है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ. इन पास्ट सेंचुरीज यंग गर्ल्स ऑफ 13 or 14 started their working lives in service. They went to live in other households, यानी दूसरों के हाउसहोल्ड्स घरों में जाके वर्क करती थी. टू वर्क एज ए सर्वेंट काम करती थी. एंड दे वर अलाउड ओनली 1 day ऑफ ईच ईयर. और साल में उनका एक दिन ऑफ होता था, मदरिंग संडे. ऑन दिस स्पेशल डे द गर्ल इन सर्विस वुड विजिट her home and her mother would bake a simnel cake for the family. यानी इन गर्ल्स को जो जाती थी दूसरे घरों में एज ए सर्वेंट वर्क करने के लिए 13 और 14 एज की गर्ल्स, तो इनको साल में एक दिन छुट्टी होती थी. और जब ये इनका ऑफ होता था ये घर जाती थी तो उनकी मदर्स ये केक स्पेशल बेक करती थी. पेज नंबर 110 and 111. You have to read on your own self. This is the recipe of simnel cake. You have to must read page number 110 and 111. Now come on page number 112. Here is poetry, testing the landscape. Testing the landscape. The bottom of the pan was a plate. This one. The bottom of the pan was a plate. Paprika can, dhania, haldi heaped like powder, paints. Melted ghee made lakes golden, rivers. The keema frying, my mother waited for the fat to bubble to the surface. Surface means सतह. Friends brought silver leaf. I dropped it on खीर. सिल्वर लीफ को खीर में डाला. Special rice pudding for parties. I tasted the landscapes customs of my father's country. Its favor on biting a chili. Chili means red pepper. Summary of the poem is: testing the landscape intends to emphasize the landscape project as an instrument that produces quality, wellness, resources, the common good processes of regenerations and reconfigurations of places and regions. Words meaning.
paprika, deep orange, red color. Cane, pungent, hot, tasting, red powder. Surface, the outside part of something, and chili mean red pepper. On page number 113, come on page number 113, here are homophones. Homophones are words which sound the same but have different spelling and different meanings. Homophones are words that have same sound but have different spelling and different meanings. There are 4 words. Write 4 sentences using each of the following homophones. These are homophones: chili and chili. Pronunciation same but spelling and meaning different. Plate, and 4th one is also plate. Sentences: chili, I like the chilly weather of December. Chili, I sprinkle chili on the beef. Plate, the painter was tired after making the picture on his plate. Next word, also plate. I got difficulty in solving the food because of swollen plate. I got difficulty swallowing mean here swollen plate mean हमारे जो थ्रोट में, गले में जो प्लेट होती है उस ये प्लेट वो है, और ये पेंटर की प्लेट है. Difference in meanings and also in spelling, but pronunciation is same. Your homework is you have to read page number 110 and 111, and also you have to write and learn summary of the poem and words meaning. Write and learn homophones. Next we will teach in next lecture, inshallah. Take care students. Allah Hafiz.